Welcome once again to Language Space. My name is Imran and we are back with another video of our journey towards learning English. अपने पिछले वीडियो में हमने past perfect tense के बारे में देखा था कि past perfect tense क्या होता है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने देखी थी कहाँ पे यूज़ होता है, और इसके अलावा हमने ये देखा था कि इस past perfect tense का sentence structure क्या है. In today's video we'll just proceed with the past perfect topic जहाँ पे हम real life examples और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है, और इसके अलावा हम contractions भी देखेंगे इसमें कैसे यूज़ किए जाते हैं. So without wasting any more time, let's go ahead and start our video. Dear viewers, if you remember, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बोला था कि हमारे जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इट रिप्रेजेंट्स पास्ट ऑफ द पास्ट. सो इट states an action that already finished in the past when another action started or that action happened. Okay? अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल्स दी थी. अब हम इस वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे. सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल वी बी we had finished our lunch. We had finished our lunch when it started raining. Right? We had finished our lunch. Now, imagine that you are in a restaurant and you're having your lunch, and for example, it's a rooftop restaurant. एक rooftop restaurant है जहाँ पे आप lunch कर रहे हो, and by the time you're having your lunch, it starts raining, or when you complete your lunch, it starts raining. And next day, you meet one of your friends and you tell him or you narrate what happened yesterday. So आप उससे ये कहते हो कि हमने लंच ख़त्म कर दिया था जब बारिश हुई. ओके? या जब हमने लंच ख़त्म कर लिया था उसके बाद बारिश हुई. ओके? सो आप ये कहोगे we had finished. So ये we had finished जो है it is the past perfect tense when our lunch when it started raining. Okay? जब बारिश होना शुरू हुई. Although अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे it started raining ये भी past है, ठीक है, क्योंकि रेन कल हुई थी या परसों हुई थी या उस दिन हुई थी जिस दिन आप लंच करने के लिए गए थे. एंड we had finished ये भी past है. So this action is also in the past and this action is also in the past. But this action finished before this action started. Right? So this is past of the past. ठीक है? इस past का भी past है ये. So that is the past perfect tense. I hope this example is clear. Let's see one more example. I reached the airport at 2 p.m. but the flight had left. All right? I reached the airport at 2 p.m. So मान लिया आप एयरपोर्ट पहुँचे कितने बजे? 2 बजे आप एयरपोर्ट पहुँचे. लेकिन by the time you reached, फ्लाइट चली गई थी.
ओके, नाउ आई रीच्ड द एयरपोर्ट. ये रीच्ड जो है इट इज एक्शन ऑफ द पास्ट, सो इट्स ए पास्ट एक्शन and this action started before this happened. So before you reached the airport, the flight had already left. This action had already been completed, and that's the reason it's past of this past, right? Now that is the reason it is past perfect tense, past of the past. ये action शुरू होने से पहले या जब ये एक्शन हुई उससे पहले ये एक्शन ऑलरेडी पास्ट में खत्म हो चुकी थी. सो सम एक्शंस दैट स्टार्टेड समटाइम्स इन द पास्ट एंड दे कंप्लीटेड इन द पास्ट एज वेल. स्टार्टेड इन द पास्ट और पास्ट में ही वो कंप्लीट भी हुई है. एंड वी कैन ऑल्सो से व्हेन वी कंपेयर टू एक्शंस, सो इट इज पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन. सो आई होप विथ दीज टू एग्जाम्पल्स इट्स अ बिट क्लियर कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और कहाँ पे यूज होता है. नाउ लेट्स सी कि हम इस पास्ट परफेक्ट टेंस को कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. अब हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शंस पास्ट परफेक्ट में कैसे बनाए जाते हैं. फॉर दिस लेट्स टेक अ वर्ब सी. ओके, एंड जब हम इसको पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, सो एट दैट टाइम इंस्टेड ऑफ सी वी यूज इट्स थर्ड फॉर्म विच इज सीन. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आई हैड सीन दिस मूवी. Okay, I had seen this movie. अब सब्जेक्ट चेंज करेंगे. You had seen this movie. Now the subject is second person singular as well as plural. Initially it was first person singular. Now they had seen this movie. We had seen this movie. And she had seen this movie. All right. Now all these sentences with different subjects are in the past perfect tense, right? Now let's see how we can contract them. As you know, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम हैड को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें, सो वी रिमूव एच ए. ओके, और सिर्फ डी यूज होगा. एंड जहां से हमने एच एंड ए को हटाया है वहां पे एक लगा देंगे, एक एप्स्ट्रॉफ लगा देंगे और ये बन जाएगा आइड सीन द मूवी. Sorry, this. Okay, so without contractions we say I had seen this movie. लेकिन जब हम contractions का यूज करेंगे we say I'd seen this movie. Okay, so I'd seen this movie. Now जब subject you है, same formula हम यूज करेंगे. You had की जगह apostrophe D, seen this movie. Okay, so it would be you had seen this movie. So instead of I had seen this movie, H and A को हटा के
you had seen this movie. They had की जगह they'd seen this movie. Alright? I hope now that we or she या अगर और कोई भी subject होगा तो हम उसके contractions बना सकते हैं, because you don't have to do much. You just have to drop off the H and A from the had and write only D and use an apostrophe here. So this is how we form the contractions in the past perfect tense. Now I would like to mention one thing here कि ये जो I'd या apostrophe D है, ये वाला contractions दो जगह पे यूज होता है. Apart from had, it is also used with would, which is a modal would. So अगर हम ये कहेंगे I would see the movie, so हम ये कह सकते हैं I would see the movie. Instead, we can write I'd see the movie. Okay, so same I had के लिए जैसे I'd use होता है, I would के लिए भी I'd use होगा I'd. So दोनों ही में same contractions है. Now a question may arise that how do we identify whether it's contraction of had or it's the contraction of would? So the shortest, the best and the only way to do that is to look at the verb associated with this I'd. If the verb associated or used along with this I'd or you would or they had or she had or we had is third form or past participle form, so in that case it is the contraction of I had. Like in this example, I'd seen, they'd worked, we'd gone, she'd started, or I've taken. So this way, when we use I'd and with it we use the past participle form or the third form of the verb, in that case it is contraction of I had. And in case if we use first or second form, in that case it is the contraction of would. I would see the movie or I'd see this movie. So this is how we can form contractions in past perfect tense. I hope that it's now clear how do we use the past perfect tense, what past perfect tense is, and how do we use it in real life, and I hope these examples are also clear. If there are any doubts, any questions or any suggestions you want to give, you can write it into the comment section. So for more such interesting videos, stay tuned to our Language Space channel and do not forget to subscribe our channel.